I couldn't connect like record all those things. What happened is that my laptop is not that much good. So if I start the connection with the OBS, it's got hang in like in few minutes. So that's why I couldn't start the connection recordings. If you want, you can do to your side. Yes. Because I just forgot to add a file in a notepad because I have to explain something to you. But I didn't find it in my phone also. Just give me 1 minute. I'll just make a file in morning only. Yeah, I got it. Got it. Got that file. I think this one only. Isn't it? No. Okay, let Good me evening, see sir. now. Yeah, good morning. Yeah. Sir, this is my first class. So, how many topics have you covered till now? Okay, those are the topics I just tell after the class because right now so many people are here who is regular. No, no, sir. So I just I'm just asking that which day is going so on many today. topics like in AWS, so many services are that. So we just covered that. And in DevOps, if I told you, those are the So services from like Maven, SonarQube, Nexus, S3, and also the GitHub and Linux. from how many days this class is going on? It's all about like 1 month approximately. Like From it's one have month. to be like, yeah, 1 month. Okay. Okay, there is so many new people are here. We're gonna talk after the class. Okay, just focus on this right now. If you didn't understand, then okay, just record this class. In the future, you will be understood all those things. Okay, so yeah, guys, now come in the pictures. Install first. I just do with the Ansible 2 minus. So what I did here, just first install the Ansible. Ansible is installed in a master server only because from the master server we have to tackle all those remote servers. So that's why. Okay, let's now install Python because I told you yesterday only that Ansible is working on Python. सर इसका डॉक्यूमेंटेशन बना देना जिससे हम पता चल जाएगा कि कितने सर्वर बनाए कौन से सर्वर में क्या इंस्टॉल किया है ना ओके ठीक है मैं बाद में बना के फिर सेंड कर दूंगा ओके got it. Now I just download the Python libraries and Python also. Yeah, all done. Now, after installing all those two, I'll just go in a multi-executing mode. Here you can see where I just write in a one server, it could be reflected in all. So right now I just come into sudo minus s means in a root server. First you have to need to go. After getting in root server, I just create the password. Where should I sd? Yeah, I should log into the where log into the remote servers. Okay, pa double s. Sorry. Password should be root. I just give a root 1 2 3 4 5 6. Is it corrected? All yeah. Root 1 2 3 4 5 6. Connected. Then I go into one file. That's file etc /sshd underscore config file. Okay. Config. Yeah. This file. Go into line number 38 first. In line number 38, as you can see, I just override the permission root because you have to like log in into the server. So that's why. Going to line number 61, that same thing that I'm gonna do here also. Now save this file, come here. Now just restart the server, system etl, restart what SSD and
systemctl. What we restart all of the things. Yeah, done. So just check it once. Is it? Yeah, it is. The connection also done. How to get the MUF phone is just one. So how to find the private IPs? Host name minus I. Okay, that's how I do all the things I done here. Now exit from the multi-executing mode. Comes in a main server. Okay. Now let's clean it first. First I have to just okay. First come in sudo minus s once more time. I think we are here. SSH first you have to create the keys in our main server. Okay. Right now where I should use the password, we didn't create the keys. Okay. Right now I just create the keys. So this is the SSH keys. There is two types of keys are here. That is public and private. So where it is keys are situated in the server, it is a hidden file called .ssh. In a hidden file, there is two types of keys. The keys name are IDs underscore RSA. That's a private key. And second key is a public key, ID slash RSA dot pub, meaning public. Okay. Keys got generated. Then after, we just need to copy ID root at the rate. Now let's see is it connected or not. If not connected, then yesterday the same thing I do, but yeah, let's take is it connected or not. Yeah, right now it is connected. Root 1, 2, 3, 4, 5, 6. See, one number of keys are added. Okay. Now connected with the second machine with the same. Yeah, same. Only the IPs are getting changing. Just do yes. Then root 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have any question that why I didn't see the password in Linux when while you just say like write the password you didn't see it. Okay. ये हम क्रिएट क्यों कर रहे हैं सर अभी? अभी हम लोग क्रिएट कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग ऑलरेडी पहले जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए थे 5, उसमें से एक को हम लोग ने मेन सर्वर बनाया. मेन सर्वर हाँ मींस एंसिबल, जो मास्टर सर्वर भी कहते हैं उसको. उसके बाद हाँ क्या किया हम लोग, हम लोग रिमोट सर्वर बनाया. रिमोट सर्वर से मास्टर सर्वर को कनेक्ट किए. कैसे कनेक्ट किए, पहले हम लोग जब जेनिक्स के टॉपिक किए थे तब रिमोट सर्वर से मास्टर सर्वर को कनेक्ट कर रहे थे विद हेल्प ऑफ एजेंट. एजेंट हम लोग क्रिएट कर रहे थे. कैसे एजेंट क्रिएट कर रहे थे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ये मैं कनेक्ट कर लूँ एक बार. तो हम लोग एजेंट क्रिएट करके कनेक्ट कर रहे थे रिमोट सर्वर, मास्टर सर्वर से रिमोट सर्वर तक. ओके. पर अभी क्या हो रहा है, एंसिबल अगर मैं एजेंट क्रिएट करने लगूँ हर जगह, तो हर एक एजेंट का एक आईपी एड्रेस होता है यूनिक, सॉरी एक आईडी होता है यूनिक. तो आईडी मुझे हर जगह पे डालना पड़ेगा. इसीलिए क्या हुआ कि एंसिबल लेके आया कि अगर आप एंसिबल से किसी रिमोट सर्वर से कनेक्ट किया कर सकते हो, तो वहां पे आपको क्या होता है, आपको नो एजेंट, कोई एजेंट नहीं लगता है. तो वहां पे क्या होता है, इजीली आप बस कुछ एजेंट अगर नहीं लगता है तो और एक उपाय से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं जो है आपका विद पासवर्ड. सो विद पासवर्ड कैसे कर सकते हैं, पहले हमको जो पासवर्ड रूट के लिए सेट करना पड़ेगा वही पासवर्ड हम लोगों ने इसके लिए सेट किया. कैसे सेट किया, मल्टी एग्जीक्यूटर मोड में आने के बाद हम लोग लिखे हाउ टू सेट रूट पासवर्ड इन एवरी मशीन. दिस इज हाउ, ऐसे हम लोग ने सेट किया पासवर्ड. ओके. पासवर्ड रूट करके हम लोग ने ऐसे सेट किया. यहाँ पे पासवर्ड हर जगह पे सेम चीज दिख रहा है आपको, पासवर्ड कैसे सेव हो गया. अभी सेट होने के बाद क्या हुआ कि हम लोग एक फाइल में गए. ये रूट को परमिट देना पड़ेगा इन सब को, इस सब के अंदर जाने के बाद सब सब में लॉग इन करने के लिए. तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट फाइल आया. मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों को कि हर एक सर्वर में एक कॉन्फ्लिक्ट फाइल होता है. कॉन्फ्लिक्ट फाइल क्या करता है, वो सिस्टम का सब रिपोर्ट करता है, सिस्टम में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. वो कॉन्फ्लिक्ट फाइल हमेशा हर सर्वर में होता है. तो वो उसको उसमें कनेक्ट करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट फाइल में. सो एंसिबल का जो कॉन्फ्लिक्ट फाइल है वो है vi है credit slash etc slash ssh slash ssh d configure. ओके, दिस इज अ कॉन्फिग फाइल. यहाँ पे जाने के बाद लाइन नंबर 38 में जाके मैंने ये
कमेंट आउट था पर मैंने इसको डिलीट किया कमेंट को, और फिर लाइन नंबर 61 पे आया, वही सेम चीज किया, यहाँ पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो है उसको अनेबल कर दिया, तो अनेबल हो गया। अभी इसको जैसा भी है चेंज करके बाहर आ गया। बाहर आने के बाद अभी मैंने, जब किसी भी सर्वर से किसी भी सर्वर से कनेक्ट करना है तो हमेशा प्राइवेट आईपी लेना है, पब्लिक आईपी से नहीं कनेक्ट करना है। ओके, तो प्राइवेट आईपी मैंने तो एक एक कैसे जनरेट करना है, मतलब पब्लिक, फॉर क्रिएटिंग द प्राइवेट आईपीज वी हैव टू रन ए कमांड, दैट कमांड कॉल्ड hostname -i। सो ये कमांड मैंने हर एक जगह पे कनेक्ट किया, उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया मल्टी मोड। एग्जिट करने के बाद हम लोग जो कनेक्ट करेंगे उसके लिए हम लोगों को कीज चाहिए, कीज नहीं क्रिएट किया हम लोग ने, बस पासवर्ड सेट किया हर एक जगह पे। तो अभी क्या करना पड़ेगा, कीज सेट करना पड़ेगा। तो वो कीज सेट करने के लिए जो पहला कमांड मैंने रन किया वो कमांड है आपका ssh डॉट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी है माइनस की जेन। सो ये करके हम लोग ने की जनरेट किया। तो कीज दो तरह का जनरेट किया, आईडी अंडरस्कोर आर एस से, ये प्राइवेट कीज, एंड आईडी अंडरस्कोर आर एस से डॉट पब, ये पब्लिक की। ये कीज कहाँ पे स्टोर होता है, ये कीज स्टोर होता है हिडन फाइल में, जो हिडन फाइल का नाम है डॉट एस। कभी भी कोई फाइल के पहले अगर डॉट लग रहा है तो वो हिडन फाइल है। जैसे मैविन का जो डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी, वो भी एक हिडन फाइल है। कैसे वो हिडन फाइल है, मैविन का अगर आप सर्च करोगे होम डायरेक्टरी का नाम है /root/.m2, सो ये भी एक हिडन फाइल है .m2। सो वैसे ही हम लोगों का एंसेबल में जो कीज जनरेट किया, की जनरेट करने के बाद हम लोग ने एंसेबल से हर एक सर्वर को कनेक्ट कर दिया। दैट्स ऑल, बस यही किया अब तक। अभी करना है असली काम। हो गया ये। अभी जाते हैं आज के टॉपिक पे। सी, तो हम लोग ने कल लिखा था प्ले बुक्स। प्ले बुक्स क्या होता है, जब बहुत सारे मॉड्यूल्स कनेक्ट होता है एक साथ तो उसको प्ले बुक्स कहते हैं। तो मॉड्यूल मतलब क्या है, मॉड्यूल मतलब स्मॉल लाइन ऑफ कोड्स वेयर वी शुड write a code to doing small tasks like install Apache, creating file, copying the file. Also आज मैं हम लोग और एक चीज करेंगे, we're gonna do extra things that we're gonna launch a website through Ansible only. Not a website like full-fledged website didn't. Yeah, we can, but right now we have to install all those things Jenkins pipeline. That's why I didn't go with that. While we just complete all those DevOps tools, then we can go in a full-fledged application. But right now I'll show you the index only. Index of the HTML page. I'll just launch it on from this server only. Okay. So yeah. So I just give me 1 minute. Uh, mute that first. Yeah. So yeah. So today we're gonna start with that. So there is two types of things you already know: ad hoc commands and modules. What is mean by ad hoc commands? I just write few ad hoc commands here so you can understood. Okay. Yesterday what we did, because we yesterday I have just make a mistake somewhere, so that's why I just write here localhost. Okay. But here I should write right now is all, because all the servers already connected. How do you know that all the servers will get connected? With the one module, that module name is ping. Okay, I told you yesterday also that we have to write ansible -m, then sorry, ansible all -m, sorry, then I have to write the ping. That's all. But it says provide host is not listed. Okay, we already connected it now. Just let it try once. SSH root @ just give the connection ID over there. See, we just already connected without password. Prod 1. Okay, what it is mean? Let me check it. Okay, just give this one. Let's see. Ansible ping to all. It's not getting connected. Hmm.
Okay. Yeah. So, uh, localhost, if I give localhost is done, means okay, if I'll do with all, then it is done. Okay, it should be walk in all. Provide host list is empty. Okay, goes in a vi slash etc slash n7, sorry, n7 slash hosts. Okay. What I did, I'll tell you. Just give me 1 minute. I just set a thing here. Prod. Give a ID over there. Okay. Then the second thing is dev connected. Dev. What I did right now, here it is say that there is no host are connected. So what I did, I'll just come in a host, like this is a host file in a conflict file only. It is a host file. So I just put my IP addresses here for listing purpose. So right now, see, is it working or not? It should be working, but let's check. Yeah, okay. I didn't put it in a host. See the same thing. It says provide all the host list empty. Host list means there is a host file. See, then I'll just go vi etc and 7 hosts. Host means where we just control our servers. So in a host file, I'll just give the that I created. Prod means production servers, and here is the development servers that I put it over the host file. After putting on in a host file, if I'll just run this command while to check or there's all servers connected with the main server or not, see, all code is succeed, all these things. Yeah. So you can see all those things. So yeah, those are the things connected done. Now today go some write a playbooks. Okay, today gonna yesterday also I write some playbooks, and today also we're gonna write some playbooks. So first playbooks, what should I write? Okay, what next? First playbooks. Okay, just take with anything. Now. So PB1 dot. I told you that playbooks are written in first. The playbooks are written in ML language. Okay, the extension should be YAML or YML. Okay, that should be two, both of that. So, and the second thing that in a playbook, it started with okay insert mode dash 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 and ended with dot dot dot. And how should I write the playbooks? Right now I show you. Okay. If anyone new here, there I think didn't understand. If not understand, then okay, I'll I'll try to if I'll have time in a Sunday. I'll try for new candidates also for revise the previous one, the like past that I do, because I think you didn't understand. But you have to record all those things because while I'll just come today, like up to that, then I didn't repeat all those things once more. So yeah, if you also don't understand, you can understand a little bit. I told you about the what is module and all those things. There's the structure that I write it right now. Okay, that's the structure. That's the follow for all of the further that I write it in future playbooks. Why I should write here become yes means if you install any server like right now what I write install Apache means there is a server like HTTPD. Okay, so
while the server is getting installed, so something changing in server. Okay. So change become yes. So that's why I just write it here, change. If you didn't install any server, if you wanted to check anything, then you didn't write this. Okay. But if you wanted to like didn't check anything, then you have to write. Like if you want to install anything, then you have to write. But anyway, if you write it, if you install or not install, it's nothing to worry about that. If you just write it, if you check anything, if you write it when it is install anything, both are the same. You didn't get any error. So in a safe way that every time you have to just write those things. That's three things. Okay. If here you just write it all, na? Here if you wanted to install the Apache in, I just put it over there na, in a host like differently. Production team for I just put the two IPs, and for the development team I just put the two IPs. So if you wanted to uh, do in a group, install in a group, then you just to have do here product, mix prod. And if you wanted to install Apache in JGroup, so you have to write dev. And if you wanted to like install in all, then you have to write all. That's all. Okay. And yeah, next, go next. I have to write tasks. What tasks I have to do? Tasks. And see, in playbooks, while you just write those playbooks, you have to be most concerned about the spaces, because it is so. If you just make any mistakes in a single structure, also like you just give a extra space, also there is a error in your playbooks. Okay, so those are the things you have to be take care of. So I just put tasks. I told you about how to write the modules yesterday already, and how to write the ad hoc commands. With that, both you will write the playbooks. So how to write the here I show you once how to write the ad hoc commands. I just tell you a few ad hoc commands. Okay, if you wanted to install any install, just take install Apache only. Okay, with the help of ad hoc commands. So how do you write? We just write in answer will. Okay, all minus m first module name. Module name means em. Em is a module in Ansible. Em having modules and module having services. How many services module have? Em module having three services. See, three states you can say, not services, state. Three states are present, absent, latest. If you wanted to install anything, then instead of install, you have to write present. If you wanted to install anything, instead of install, you have to write absent. And same as if you wanted to upgrade anything, enable anything, you have to write latest instead of upgrade of latest version or anything. Okay. So I right now I just write a ad hoc command. Ad hoc command is with the run ad hoc. I just write a full module command. Okay. I show you the ad hoc command also. This is the argument. What argument you have to give here? Ansible all minus m. Yum means module. Then I have to give the minus a means argument. As you can see here, how to write the modules. See, after giving the argument, what you have to need? Name of the what application you have to install. Just take HTTPD means Apache, and state will be what? Present, because you have to install anything. ES, sorry, ENT, yeah, present. So if you wanted to install anything, then you have to put present. So that's the full ad hoc command, sorry, module command. And if you wanted to write a ad hoc command, then the same thing, Ansible all minus a, then just put it over there, all those things. Yum install HTTPD, sorry, TPD. Okay, that's the ad hoc command, and upper one is a module command. So see, in a module command, you have to ensure. Why you just write it? You just say that, sir, like Vishal, you can write it. We can write the ad hoc command, na? But if you want to write the ad hoc command, every time is your copy, all those things are here. So playbooks should be not support the ad hoc. Not support one and only the ad hoc command. Why? Cause playbook should be the phrase. Means if anyone see the playbook, they can understood after you write. I just write it here the few lines of playbooks. But if real time, you'll get so many types of playbooks. So that's why while anyone will like show the playbooks, they can understood. Okay, those are the modules are using. Those are the things are using. That's why there's a difference between writing in an ad hoc command and writing in a module command. So it's a standard
and also Ansible support is a ad hoc module command. Okay, so that's the thing that we wanna do. So what first I do, write the Ansible. If I wanted to do in a all, then you have to write all. If you want to do in a group way means you have to write the product here, like prod. And if you wanted to do in a dev group, then you have to write dev. And if you want to do in a all, then all. And if you want to write in a only the master, then I have to write the local host. Okay. Then I have to write minus m means module name, yum, it should be anything. I just show you. There is so many types of master modules are there, yum, then started, so many things. Like okay, not started. Yum, copy, user, so many types of modules are there. We're gonna discuss about all those things. After write the modules, we in the bracket have to write name, what we have to install, and install present. State is present. Understood? So that's how I have to write. Next. So here you have to write name in task. What should be the, you have to give a space. Okay. Name is, well, it is a heading. Okay. See, while you just give a heading in a playbooks, you have to write this one. I don't know. I just call is a minus. Okay. While you just write a heading everywhere. Okay. Here I have to write a heading. Heading means what I do, that I have to installing Apache. That's I have to write. After come here, after name, I told you what you have to write. Yum module name. Okay, let's come here. After write the module, now here do not give the minus here. Okay, because it is not the module. Here I just do the tasks. HTTPD, what you have to route, what you have to download, and what's the state. State should be uh, present. Okay. Now let's also we have to print a message here. Okay, we can print a message. But see, my sequential is should be same. Okay, in name I just put print a message. This is the heading. Okay, print message. Okay, now come here. At the same time, you have to write. Sorry for message. What is the module name? Debug. Debug is a module name here. After that, we just have to write MSG for message. You have to put your message over here. Apache ins what installed. Okay, those are the things you have to write. And if you wanted to also install the Apache, for that you have to write one more heading. Okay, heading is must because I told you before that if anyone comes, that they can also understood. Starting Apache. Okay, now come over here. What's the after writing the module? You have to write what service. Sorry, module name. What is the module name? Service is a module name. See, I just write it here over here. I just didn't write all those modules over here. The services module. In the service module, there is a states. Sorry, yeah, states. Four states are here: started, stopped, restarted, enabled. Okay. If you wanted to start anything, then started you have to write. You have to stop anything, stopped. Okay. And if you want to restart, restarted. And if you want to enable means restart, like reboot the server, you have to write enabled. Okay. So yeah, I have to write enable. Sorry, service. After writing the service, you have to write below of this service. I think over go not write that like this. Okay. Service name. What is the name? HTTPD. Then what you have to do? State. State what? What should be the state? Started. Started should be the state. And in the end, I have to write dot dot dot. You understood or not? Just tell me once. Because there's the file. So many people are right here new. That's why I'll just repeat. The guys understood or not? Okay. Everyone understood. I just take it as a yes. Okay. Now
Save that. Okay. Come here first. Save that. For run for uh, checking Ansible. Right now, I just run the Ansible. There is no of checking because for the checking, I told you write it as syntax check. Okay, in a last. But right now, not going with the check. VB of YML and run this. See what it is did. See what it is did. First, I told you gathering the facts means it is just gathering the system information, what's the system IP and all. Okay. And okay, in a fourth system, I just give them. I told you yellow means something getting changed. Okay. And see, install. The message is printing message. And see all those things. Apache is getting installed over here. Okay. Next playbook we have to write. Now write a playbook. What? Copy the file. Okay. Now write a playbook. Copy the file. pb2.yml. Okay. That's a second playbook. What I have to write? Dot dash. Sorry. Yeah. Next dash. Rename it over there. What the name? Create users and copy it. Okay. Copy let's file. Yeah. Copy the files. Yeah. We can take. So first I have to write the host. Host means all. Give it here. We also if you don't want, you can don't give here become because here we didn't install anything. But for the safe side, for the like you can say for the concern or everything, I just write it here become. Okay. It's not harmful for you. Okay. If you write it also, it's not harmful. Just going in a task. What should be the first task? Give a heading for it. What should be the heading? First, create user. So creating what? User. Now, for the creating user, there is a module called user. That's the module name. Okay. Module name. After writing the module name, we have to just write it in a name. Just write it Vishal and state should be we just creating the module here. We're creating the user here. So new is we just take it as a taking as a install. Install means present. Okay. PRESENT. Yeah. A spelling mistake, guys. See, if I do any like anywhere the spelling mistake, told me because I have four eyes, so that's why. See, next after creating the user, we have to copy the user. Copy user. Okay, come here. What should be the module here? Copy. Copy should be the module here. Copy. While you just copy, first we have to give the source. Source means src. Okay. Source. What should be the not like that. What should be the source? File one. We didn't. Okay. You can make it the user. Okay. Didn't make the file one. Okay. Give me 1 minute, guys. Okay. File one. Okay. Just keep it here. I didn't make any file here actually. See. First, I have to make a file. Touch file one and yeah, file one got created. Now come here. Okay. File one insert source is equal to file one. Then just give sorry, just give txt. Okay, txt file. And now I have to give the destination, like destination means dest. What should be the destination? See, destination, what should I give? In every file you have to copy, na? So here, what should be the home directory? Right now we already in a root directory, but here the root directory should be /home /ec2 /user. I told you the home directory program I show you. Just take any, go in a connection. The directory, see, username. So while you just connect the EC2 instance, first is /home /EC2 /home /EC2 dot means so minus user. Okay.
So that's all. So let's connect. What should be the destination? Slash home slash ec2 dot user. That's that's the directory name. Okay. So our task is done. Just dot 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 come over, and if I just do Ansible playbook, what what playbook pv2 dot yml. Let's check it. User got created. Something is happening. Let's check it. What remote is a failed change. User got created, but file is not getting transferred. That expect user the copy module of www. Okay, we just did something wrong. Let's go there. Something error mistake is happening. No issue. Mistake. Source. Okay, file one. This not giving anything. The extension. Okay, insert. Yeah, let's give this. Now just run it. Let's see, is it run it or not? Yeah, it's run. The TX file is not there. That's why it is happening. Now check it there. Is it working or not? So if I do ls, okay, we don't have any root user. So just now go in our home. Now do see in a home directory we have two. First vsr and second is EC2 instance. So I have to where I just put the file in c2. So I have to write cd slash ec2 slash user. cd ec2, I just put right now. cd, okay, just do cat here. No, cat or not over here. Sir, I did cd, directly CDEC2. why? It is already there, na? See? Yeah, I just didn't write the slash one here. If I do ls here, file one is here already. The slash I just put it over here, the home. See, the file one is already copied, same as the all. And yeah, uh, then this task is done. And I told you few things. Is it I write it? I just forgot it something here to write. Okay, I'll tell you. Okay. See, if the color is having a yellow, it's also asked in your interview sometimes. If it is a color is yellow, then it is getting changed mode. Okay, and if it is the color is green, already executed means if it is executed anything, just created anything here. So if it is executed anything, then it could be green. The color is green. And if it is blue, then it is skipping blue. We can see what is blue and all. If it is color is blue, then it is skip anything. And the third one, and red one is failed. Like yeah, red wasn't failed. I think if I remember any more, then I told you. I think yeah, all those things. Okay. Now do one more playbook. Where? Oh, we can do one more things here. Okay. Just do one thing. Okay. Just write first a playbook. pv3.yml. Okay. So here dot dash dot name. Give it a name. What should I name? Uh, first. Okay. Before what? Okay. Wait. Show you something. Come over. See what playbook we have. PV1, PV2, PV3. So in cat PV1, what I downloaded? Okay, cat PV1. Apache installed. Okay, so if you wanted to install, okay, so what I do? What I have to do? Anyone? If you wanted to install this, what I have to do? Anyone? If you want to install it, you have to just do. This is the present, na? We have to do the absent means install.
How do you do? We can do one more thing that I just go there like PB, sorry, PB1, I think one, no, it is YML. If I go there and here you can just manually go there and do the absent. But we do the Mentos life. Mentos means I ate Mentos today, so I do in a Mentos way. How do you do in a Mentos way? There is a command called seed. Okay, seed minus I. Then you have to write string. If you wanted to change any string, then you have to write a string. If it is like most of the things are getting a string also, what I'm saying. So see, first, what do you have to write? Present. What is present in this message? Okay, present to what? Here is it. Yeah, present to absent. Globally. Globally means all the way. Then put it over there. Where I have to should change? PB1 dot YML. If I just write PB1 dot YML, see, it's getting changed to absent automatically. Okay. So right now, if I just, okay, not like that. Ansible playbook sorry, PB1 dot YML. If I do, it's getting installed. Okay. Here you can see the install, like the printing message is installed, but yeah, in a way it is got why. Okay, one thing, see, guys, here. Here you can see one failed statement is here. See, so you can understand what is failed here. Okay, so if you just see the cat pv1, what the thing I write it first, I install the Apache, then after I print the message. Okay, both are tasks are working here, but in a third task, starting the Apache, why it's getting error? Because here I just install the Apache, then after I print the message, and then after I wanted to start the Apache, but Apache is not having in a server. So how could it start it? So that's why even it give the failed message here. Okay, see, it is giving the failed message. So for that, if you wanted to ignore those messages, because I already know that it is giving the error. So why I should write like show a seed every time? So if you wanted to ignore these messages, there is a command I told you. Just go in a VIPv1. Go. Yeah, sorry. Go in a. Here you have to write one more thing. I show you here. You have to write ignore underscore errors. That's all. What? True. That you have to write. Ignore underscore errors. Yeah, that's you have to write. If I just do right now, save the file and run this one more time. See, in that time you just get a message that see, ignoring, 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 and here you didn't get a fail is 0 0 0 0. Okay, see, understood? That's how you have to ignore those messages if you know already that yeah, those are things that you don't want you to come. Next task, guys, understood? Next task, what should be the our pb3 na pb3 yml. So first write the inst. Okay, what we should do, just install the nginx. Anyone know about the nginx? So we have to install the nginx server. Mm. Install nginx. Okay, now write the hosts over here, all, then write what, become, become, yes. Okay, just you have to write tasks. Okay, over the tasks you have to write name, what should be our installing, sorry, installing. Okay. One thing I forgot it. Okay, see, I told you there is a package name like apt we using in a Ubuntu and all, and
yeah, Amazon Linux 2, you have to use the Amazon Linux extras. I told you yesterday also. This is the package name. So every OS having their own what libraries. In their libraries, there is a like what I installed, what I installed, like Ubuntu, sorry, what I installed like Apache, EC2, and all those things. Those are already present in library in Amazon Linux. But if you wanted to install the Nginx, then if you wanted to check it in a Google, I just show you. Is it in Amazon Linux 2 OS? We can install the Nginx, uh, Nginx as it is Ansible, or you can write git etc. Put over here, you can get. See what is right? Yes, but what to do is here it is says. Wait, where it is, extras. Enable, install repo. Why should the repository name? Why does Git is repository? See here, what is right? While Git and all those things, repository, it is available in a what? In the Linux server, like Amazon Linux servers. But Nginx, mainly Nginx, and Ansible we already download how to do. Okay, is often not found in extra repository. Like extras means Amazon Linux extras. So for that we have to install something. Okay, first you have to install in a repository, and then you have to take the repository from the Linux. Okay, so in the simple way you can take that in a like in Amazon Linux there is a not defaultly Nginx is there. We have to first take the repository of Nginx and put in a Amazon Linux repository. And from that repository, you have to start the Nginx, install the Nginx and install the Nginx from there. Okay. So yeah, let's first enable the Nginx in the Amazon Linux. Enable what? Nginx. And if you see now, there is a color changing is there. So those are the like predefined like things are there. If you write it failed, so it is showing in a red color. If you write it successful, if it is showing in a green color. So those are the things there's a like before in a what should be the what should be the uh, here like module. Module is command here. Okay. Echo job. Okay. Yeah, leave it. So module should be the command here. Okay. Command, then I have to write here uh, Amazon. First I have to write Linux extras. Sorry, extras. Enable Nginx. Which version I have to write? Nginx 1. Just take one. Yeah. Nginx 1. Okay. Give it the name. All those things are done. Is there anything? No. Okay. Just write the second. Now I have to do the all those things as before. First, then what? Install Nginx. Go in a name. First, here you can write name it as name. Okay, yeah, name Nginx. Then write state what present. Then install the second like start Nginx. Okay, yeah. Name. What should be the name?
Nginx. State should be the started. Okay. Now going on next, put it dot dot dot. Kept. Okay, so come over here. If you just write answer will play book what pv3 dot yml. Okay, we just make, yeah, I just say this is a syntax error I did. Let's check. Why did I do mistake? Okay, this is not syntax error. Okay, this one, I think. Okay, all the names are comes over here. Okay, syntax error I also didn't understand why I did wrong. But let's take help of ChatGPT. Because here you can see already. Q if I do. See there is often mistakes here. Somewhere start. Okay. Okay. Start. No, is it right now? Already is it right? Nginx. Yeah. INX. Yeah, INX. Yeah, right. INX, right. Yeah, I just right here on this. No, there is a syntax error actually. I get. Yeah, there's a syntax error. Let's check it through once. Uh, let's check it once. Uh, where did I do mistake over here? Okay. There's a syntax error, but where? Name state is started. Okay. Okay, all those things are correct only. But here I just forgot to do one thing. Just go in insert mode. Yeah, this one I think. Okay, no. Also, it should be over here. Yeah, the service name. I forgot. Correct. Just run it. Yeah, done. I was getting ignorable. PV3. Sorry. Dot YML. See, first what it did, enable the Nginx repo. Then after install the Nginx, and then I will start the Nginx. See, all those things are corrected. I just didn't write the service name over there. Now the next I just deploy a application right now. Okay, first write a index.html file. Okay, in that file just create some index.html from my repository. Git. Just leave it for my repositories. Uh, website, just take this one. Oh, not this one. I didn't like. Hmm. Just go with the Netflix. Like it's not showing the Netflix total, but it's only showing the index part only. Okay. So index part, copied here, paste it over here. Okay, done.
See, index.html, we just find it. Now write a pb4.yml. Okay, insert. First you have to write dot dot dot, then write dot, then write name over here. Just give me 1 minute, please. Okay, what is it? Then, okay, name posts all. Okay, and now I'll give a become. Yes, okay, then do tags also over here. Name, okay, but enable nginx, then command. Oh, masa lag jabe. Amazon Linux extras enable nginx one. Sorry, nginx one. Okay, now coming on next name, give it a name. What should be the name? Already install the nginx, but here you have to just restart it over there because yeah, okay, no issue. Because here these engineers didn't know that um, that thing, okay, like that the playbook that I created before. Here only now, here only, just giving, uh, just put one more em name nginx state present, okay. Now creating after the creating the nginx here. For the logic, you can only understand that starting the nginx, starting nginx, okay. Okay, the service module, why I forgot it every time. Yeah, from here only I have to write the name nginx and state should be started. And then after, okay, then after I have to put our file here, okay. Name means we have to just deploy a web page. Okay, page spelling is okay, leave it. For copying, we already created the files, right? It is a module. Copy is a new module. You have to write those modules, guys, because if you didn't write, you just forgot it. How many types of modules are there? After write a, sorry, source, src, source should be, source should be index.html. Okay, it is, yeah, index.html. Now coming on next, dest, what should be the dest? There is a nginx. I told you yesterday, not yesterday, like who is the present from further, like pastly. They're gonna know every server they are having a directory where that in have to put those things in a their directory, then they can show us from there. So like that, here also Nginx having their directory called user slash share slash engine x HTML. Like those are written here extra from the Nginx. It is started Nginx slash HTML slash. I have to put my file name index.html. I think I just did it right. After deploying the, see, this is the concept. First, I install the repo.
then start the Nginx. Okay. Then after starting, we have to put our file here. But after putting the file, I told you if in the Jenkins also, if you install any plugins, you have to restart our Jenkins. So like that, after putting the plugins, you have to restart our what? Nginx also. Restart what? Engine X. Okay. For restarting also using the service. Okay. From here only, name what? Nginx and state what should be? State should be started. St. Sorry, I restarted. Sorry, restarted. I think restarted. Let me check it. Uh, yeah, just copy this also because I did mistake sometimes in my spelling. That's why. Just put it over here. Okay. And I think our work is done. Dot dot dot. Sorry. Yeah. Save it and just run it and sevel playbook pb4.yml. If you run that, enable the installing, starting, deploying. There is a issue. Let's check it. Web page having the issue. Check some messages seeing the destination having the issue. Let's take a look. Our file should be index that. No? Just check it once. File is just list it down over. Look, wait. Do ls index.html and now look in a vi source in a copy source. Okay. Index.html and destination. Okay, not users. Mistake. But I make a mistake. That's a mistake. 1, 2, and 3. USR. There, Nginx, HTML. I think that's enough. Let's run it once more time. Let's check. Yeah, it's done. So the web page is already done. Now check it. If I already put it over there, so I have to see from not in Ansible, in any of this. Just check it in this one. Product one. Just copy this and put it over internet. Just check it. Is it our deployment is done or not? See, it is done. It has HTML file, I know, but yeah, see, it is working. You will check every like in every machine it is working. But I told you one more time, in Ansible it is not working because it is a master server. I told you it is like manager. From the manager, it is manager didn't do anything. Just say here it is not working. If I do continue, see it is not working. Refuse to connect. So that's how it is working. Guys, there is something I have to told you. There is one more thing that I told you. After that, you have to go keep. I have to complete the AWS one service. If you wanted to check your CPU, like your remote server configuration, then there is a command called ansible all -m setup. Okay, sorry, setup. That is the command where you check your all machine configuration, remote machine. Okay, see all those machine, all those like so big configurations are here. Here is the end date of one configuration, is started of one. See, here is showing the IP addresses, IP address, IP4, same as that prod one. What it is? That 5025 to 25 to 25. It is showing the public IPs, I think. IP4 address of all. See. Then here is showing also some
show you something. When it is created, this also saying all those things. Uh, mm, What I have to show you that. See how many types of Amazon Elastic volume, block volume, how many types of storage, size, all those things showing here. But those are the not things that I have to go. I just show you one more things, one more command that I want to show you. Just go in Linux. Okay. If you wanted to only see the CPU utilization, how much CPU utilization or not CPU utilization, what is CPU of this those things, then you have to write Ansible all minus m setup. Okay. As you know, the grep minus I have to write the CPU only. We write this, you will get only the CPU information. See, CPU information, processor, and all those things. And if you wanted to know what OS is using in here, then you have to write here. Oh, really. 1 minute, guys. Okay. Yeah, come. So I have to write family. See which family they have, what? No, not this one. Is it a Mac? Okay, okay, sorry. If you just see those family man, red hat, those all are missing and keeping in a red hat. Okay. And if you wanted to see the CPU, then CPU memory, how much memory it is using, you can check it from here. See, it is using this type of memory, rub memory. Yeah, yeah, those memory utilization is there. Memory in MB. Okay, it is giving in MB. Okay, okay, MB. Okay, see, those are the memory. Non-volatile memory controller. Non-volatile memory controller means you understood, na? Persistent volume in persistent volume already decided in a AWS class. EVS is a non-persistent. Is it? It is if you want to restart your server, the data is not getting goes anywhere. And it is a inner Amazon.com, and it is a device ID. Every device having their own ID. Okay. So all those things you can see. So up to that, Ansible like not is it like that. We have so many things are there to cover. But yeah, right now I'll just stop here. I gonna start with the new topic in AWS, guys. If anyone wanted to like let's first check it. Then how many people are here to go with that? So guys, are you interested to? I just go with the AWS part like CloudWatch today. Anyone? Okay, we're gonna take by tomorrow this one. So many things are there. So yeah, Sir, yeah. uh, like we do attend morning meetings, what do we have to tell them? For the morning meetings, you don't attend. If you say to Vamshi that you already uh, attend the night meeting, so you don't need to attend the morning also. Cause say Bisal says that you have to only attend one. Because Okay. Movana ma'am also told me that if any intern is attend only one meeting, then it is enough. Actually. Okay, okay, sure. Yeah. Yes. So yeah, guys, you've understood all those things that I like cover today little bit. Those I did. You have to practice every day. I show the same because we come in a Devops. Yeah. So tomorrow we're gonna go with. Israel show you a little bit in a Ansible only. Just show you little bit. Okay. What I cover. What next? What next? I didn't make any notes. That's the problem. Uh, mm, what next?
just do setup module. I told you one more thing. I told you. I just show you this command. This is last. Okay. Then after plus is this one. Okay. This is the system configuration. That's why I just take cause those many things I can't like. You can also like these are copy paste things, but yeah, I'll just show you what it is. First write a first clear those things. How many are here? PV5, no? VI PV5 dot YML. So we're gonna just copy and paste it over here. Uh, no. Up to that. Yeah, I think copy and paste. Dot dot. Okay, sorry. Ah, shit. What I did. Leave that. Leave out from here. Just make one more. PB6.YML. And now put it over here. I just give. Okay, come in a insert mode. And dot. Why you see here? This is a server. Like if you wanted to see the what is the condition of the server. Okay, you can see. Server first is showing the server name. It is saying the CPU processors, how many processor, what these things, memory size, and also in which family means which OS is from there, and also it is showing the package name. Okay, those are the same. If you wanted to add anything, so those are things you can add. Okay, so just write one thing, just copy that and run this. Answer will PV6, 6 YML. If you run it, you will get those. I make mistakes. Sorry. What I make mistakes. Answer will. I did. Okay. Sometimes I forgot it. The playbook. Yeah. See, it is showing. Message. The server name is prod1. Number of CPUs are 2. Total memory size is this. The flavor means the family name is Red Hat. And the package manager is Yum. See, those are all you can see. Or you can also add more. Okay. So yeah, guys. Today then we're gonna go up to that. Tomorrow's like in if anyhow I told you from today only. If anyhow for something I didn't cover that, like the AWS services, so we're gonna have to cover tomorrow anyhow. Okay. So yeah, guys, see you tomorrow. Bye bye. If anyone any concern, then tell me. Anyone have Sir, topic for tomorrow is topic for tomorrow? Just practice all those things here. Nothing more. okay, sir. No issue. Yeah, just practice all those things. And what you how about your Maven? Did you do? Yes, sir. yes, sir. कर लिया मैं मैंने तो practice कर ली. कर लिया Practice practice सब? नहीं practice नहीं है theory. हाँ थ्योरी. मैं पूछूं फिर? हाँ सर पूछो मैंने देखा है तो पढ़ लिया. अभी बोलो मुझको कि मैवन का लाइफ साइकिल क्या होता है? मैविन की लाइफ साइकिल होती है मतलब स्टेजेस होते हैं इसमें. ठीक है. हाँ जैसे हाँ. पहला स्टेज होता है वैलिडेट होता है. फिर दूसरा होता है कंपाइल. और हम्म, तीसरा टेस्ट. फिर पैकेज. फिर हम्म, इंस्टॉल. फिर डिप्लॉय. हम्म, और एक होता है लास्ट में क्लीन. क्या? और तीन. अब क्लीन, हाँ क्लीन पैकेज. अच्छा. हाँ, तो हमको अगर ये सब पैकेज को एक ही साथ यूज करना है तो कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा? एक एक साथ यूज करने को तो नहीं पता बट वन बाय वन तो फिर मतलब हाँ एक साथ. अगर हमें पैकेज यूज करना है तो हमें पैकेज से जो ऊपर वाले जिसके स्टेजेस है वो पहले यूज करने पड़ेंगे उसके बाद पैकेज यूज होगा.
हाँ, पर मैं आपको बताता हूँ और एक है कमांड जो है आपका mvn क्लीन पैकेज। अगर आप इसको यूज करोगे तो आपका जो भी मैंने आपने बोला वो लाइफ साइकिल वो सब वन बाय वन चलता रहेगा अच्छा, विद दैट वन कमांड। कमांड का नाम क्या है? mvn क्लीन पैकेज। एम्बिएंट क्लीन पे ठीक है। ओ। हाँ। और बाकी इसमें अम, डायरेक्टरी एक स्ट्रक्चर होता है, वो देखा था। क्या? जैसे कि पहले जैसे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जैसे पहले इसमें सोर्स होता है, फिर मेन, फिर टेस्ट, फिर हम्म, फॉर्म डॉट एक्सएमएल, ऐसे करके। हाँ, तो मुझे बताओ टारगेट फाइल कहाँ पे स्टोर होता है? टारगेट फाइल कहाँ पे? स्टोर होता है। टारगेट फाइल हमारा स्टोर होता है एंटी गेट, नहीं, एक मिनट, आर्टिफैक्ट। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड। आर्टिफैक्ट खुद ही एक फाइल है। पैकेज में होता है शायद। टारगेट फाइल स्टोर होता है स्लैश रूट स्लैश होम डायरेक्टरी क्या है मैवेन का? मैंने होम डायरेक्टरी डॉट एम करके है शायद। सर इतना डीप नहीं देखा, ऊपर ऊपर से थ्योरी थ्योरी पढ़ी है। ये ऊपर ऊपर है, ये डीप कहाँ है? ये एकदम ही ऊपर ऊपर। डीप मैं आपको पूछूं तो रुको, डीप डीप छोड़ो, पूछ नहीं पूछता हूँ मैं, ये सब ऊपर ऊपर पूछ रहा हूँ आपको जो भी मतलब है। ऊपर ऊपर से मतलब ये देखा कि मैविन क्या है। मैविन जैसे कि बिल्ड टूल है, ठीक है। ये हम्म ये यूज होता है जावा और रूबी के लिए, ओपन सोर्स है, और इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और स्टेजेस देखे, ठीक है। हम्म और बस यही देखा, इससे ज्यादा मैंने देखा। और डीप में जाओ वो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले बात है कि मैवेन एक बिल्ड टूल है। इसका जो होम डायरेक्टरी है वो है स्लैश रूट स्लैश डॉट एम टू। ठीक है। इसमें टारगेट फाइल आपका स्टोर होता है यहाँ पे। बट आप बता सकते हो यहाँ पे टारगेट फाइल क्रिएट कहाँ पे होता है? क्रिएट कहाँ पे होता है? कौन सा स्टेज में टारगेट फाइल क्रिएट होता है? वो होता है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ होता है, इंस्टॉल या पैकेज में से किसी में होता है, या नहीं पैकेज। नहीं, टेस्ट में होता है, टेस्ट में। टेस्ट में आप टेस्ट ही होता है, उसमें क्यों इंस्टॉल होगा? नहीं पता। कंपाइल में होता है टारगेट फाइल। अच्छा, कंपाइल में टारगेट फाइल आपका क्रिएट होता है। अच्छा मुझे बताओ एक सिंपल जावा का, जावा का और एक आप जावा जानते हो थोड़ा सा? सौरभ, सौरभ। जावा जानते हो जावा? सर मैं अपने एक फ्रेंड को और बुलाता हूँ, एक सेकंड दो, एक सेकंड। वो भी था हम्म अभी तक पढ़ाई। तो मुझे बताओ जावा, हर जावा का जो हर एक फाइल होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? बोल सकते हो? क्या होता सर, क्वेश्चन क्या था? जावा का जावा का हर एक फाइल का लास्ट में जो एक्सटेंशन होता है ना, जैसे टीएक्सटी ये सब हो गया, जावा का हर एक फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? और सर एक्सटेंशन है। इसके लिए जावा को इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जैसे जावा कोड को आप कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा, क्लास फाइल, समझ गया। क्लास फाइल आपका होता है जावा का। तो वो क्लास फाइल ही टारगेट फाइल में कन्वर्ट होता है कंपाइल स्टेज में। ठीक है। और हम्म, जो आप आर्टिफैक्ट बोले
वो बोल सकते हो कौन सा स्टेज में इंस्टॉल होता है, मतलब क्रिएट होता है आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट हम्म आर्टिफैक्ट टारगेट आई, मतलब आर्टिफैक्ट जो होता है वो टारगेट डायरेक्टरी के अंदर होता है। और हम्म ये और ये जो क्रिएट मतलब क्या बोला, क्रिएट क्रिएट कहाँ पे होता है, क्रिएट कौन सा स्टेज में होता है? कौन से स्टेज में होता है? ये पैकेज में होता है। हाँ, और ये आर्टिफैक्ट है क्या? आर्टिफैक्ट एक फाइल है जो, जैसे जावा का कोड सर्वर पे नहीं जाता, आर्टिफैक्ट जाता है, हाँ, मतलब पर डिप्लॉय। ये, हाँ तो आर्टिफैक्ट होता क्या है, मतलब इसमें कौन सा फाइल रहता है? जैसे मैंने बताया टारगेट फाइल रहता है, तो अच्छा अच्छा आर्टिफैक्ट में अच्छा। कौन सा फाइल रहता है? आर्टिफैक्ट में डॉट जार या फिर डॉट वॉर, WAR। तो डॉट जार का मीनिंग क्या है? डॉट जार फाइल में क्या क्या कंटेंट्स रहता है? डॉट जार में हम्म डॉट जार में क्या होता है? हाँ, डॉट जार में मतलब वो होता है, ऐसा भूलिए। डॉट जार में आपका क्लास फाइल्स होता है, जो आपका बैकएंड होता है ओनली। अच्छा और डॉट वार में बैकएंड भी होता है प्लस फ्रंट एंड भी होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे आप जो बोले पहले वो गलत होगा। कौन सा गलत होगा? आप बोले कि पैकेज में आर्टिफैक्ट क्रिएट होता है, सही है। आर्टिफैक्ट क्या है? आर्टिफैक्ट में कौन सा फाइल क्रिएट होता है? आर्टिफैक्ट में सिर्फ एक फाइल क्रिएट होता है, जो है वार फाइल, जार फाइल नहीं। अच्छा, ओनली क्यों वन। जार फाइल नहीं? वार फाइल, क्योंकि वार जार फाइल का ये डिसएडवांटेज है, जार फाइल ओनली होल्ड करता है बैकएंड को, फ्रंट एंड को नहीं होल्ड करता है। अगर फ्रंट एंड होल्ड नहीं करेगा तो आप देखोगे क्या स्क्रीन में? पर वार फाइल होल्ड करता है फ्रंट एंड प्लस बैकएंड, मींस इट इज होल्ड HTML CSS जावा स्क्रिप्ट और जावा सब कुछ। अच्छा, इसलिए इ- डिप्लॉय इस होता है बाद इसीलिए डिप्लॉय होता है वार फाइल, नॉट जार फाइल। ठीक है। में। हाँ, ओके। हाँ, अभी मुझे बताओ, और एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जेनकिंस में प्लगइन्स कितने तरह का होता है? सर जेनकिंस नहीं पढ़ा मैंने, आपने मैविन सॉरी पढ़ा सॉरी, है। मैवेन में प्लगइन्स कितने तरह का होता है? क्या क्या कितने तरीके के होते हैं? प्लगइन्स प्लगइन्स। सौरभ, आप बताओ। बताओ भाई जरा। जो मैवेन में प्लगइन्स कितने तरह का होता है? इसमें 3 तरह का प्लगइन्स होता है। प्लगइन्स कब यूज होता है? जब आपका स्टेजेस होता है, जैसे कंपाइल टेस्ट ये सब स्टेज होने के टाइम पे प्लगइन्स यूज होता है। प्लगइन्स के थ्रू ही आपका ये स्टेज कंप्लीट होता है। प्लगइन्स मतलब 3 तरह का प्लगइन्स होता है। एक है आपका मैवेन कंपाइल प्लगइन, जो कंपाइल टाइम पे यूज होता है। मैवेन श्योर फायर प्लगइन्स, जो टेस्ट के टाइम पे यूज होता है। और आपका लास्ट है मैवेन जार फाइल्स और वर फाइल्स, ये आपका पैकेज क्रिएशन में यूज होता है। ठीक है। सेकंड वाला क्या बताया था? श्योर फायर प्लगइन्स, ये आपका, हाँ, और एक है आपका फर्स्ट जो बोला था वो कंपाइल प्लगइन, कंपाइलर ना, कंपाइल। कंपाइल, श्योर फाइल प्लगइन और जार फाइल और वर फाइल। हाँ, ये प्लगइन। ओके और ओके। आपका बताइए मैविन में सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सा है? वो है पॉम एक्सएमएल। फॉर्म फॉर्म फुल फॉर्म क्या है? फॉर्म की फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। फॉर्म क्या क्या होल्ड करता है? ये होल्ड करता है जार फाइल और वर। नहीं, फॉर्म के अंदर रहता है आपका प्रोजेक्ट डिटेल्स,
डिपेंडेंसीज, प्लगइन्स। मतलब मुझे ये पता है कि चेक क्या करता है, होल्ड क्या करता है वो भूल गया, बट ये चेक करता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को। हाँ, चेक करता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को, पर इसके अंदर होल्ड होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आता भी है। तो इसमें होल्ड रहता है आपका प्रोजेक्ट डिटेल्स, डिपेंडेंसीज। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, मैविन वाला दिखाता हूँ आपको। अच्छा रुको एक मिनट, पहले इसको रिपोजिटरीज, देखो दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है? मैंने स्क्रीन शेयर तो किया है, क्यों नहीं दिखेगा? तेरे को दिख हाँ रहा सर? हाँ हाँ, कोडिंग्स मेरे में को है। नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे होल्ड करता है प्रोजेक्ट डिटेल्स। प्रोजेक्ट डिटेल्स में क्या क्या होल्ड करता है? प्रोजेक्ट डिटेल्स मतलब ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, पैकेज नेम, सॉरी, एंड वर्जन। वर्जन कहाँ पे है? वर्जन आ गया। एंड उसके बाद डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज देखो, दिख नहीं रहा, डिपेंडेंसीज। दिख नहीं रहा। उसके बाद मैंने बोला था और क्या होल्ड करता है? प्लगइन्स होल्ड करता है। देखो प्लगइन्स। और क्या होल्ड करता है? कॉन्फ़िगरेशन होल्ड करता है। कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसे दिखेगा नहीं, मतलब हम जो कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन टूल है, तो वो कॉन्फ़िगर भी होल्ड करता है इसमें फॉर्म फाइल। और फॉर्म फाइल हम लोग खुद नहीं बनाते हैं, फॉर्म फाइल डेवलपर देता है, क्योंकि इसमें सब जावा कोड होता है, तो ये सब में हम लोग नहीं लिखते हैं, ये सब डेवलपर लोग बना के देते हैं हम लोगों को फॉर्म फाइल। ठीक है, तो फॉर्म फाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पे जो वर्जन है ना, स्नैप्स, ये वर्जन के लिए आपको जो डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, ये वर्जन को देख के डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारी चीज है यहाँ पे ऐसे। आप थोड़ा लेट कर दिए ये आने में, पर ठीक है। क्लाउड में। हाँ, क्लाउड में भी बहुत सारी चीज है जो आप शायद जानते नहीं होंगे, ऐसे क्या करना होता है। सर आप बेसिक से डेवऑप्स पढ़ा दो एक बार, बता। बेसिक्स पे डेवॉप्स पढ़ा दूंगा, पर अगर आपको ये नहीं पता होगा, क्योंकि हम लोग जब बाद में प्रोजेक्ट करेंगे, तब एडब्ल्यूएस, जो डेवॉप्स इंजीनियर होता है ना, उसको एडब्ल्यूएस आना ही चाहिए डेव में। एडब्ल्यूएस हमें आता है, कल आपने देखा तो था, कल आंसर करते रहते। हाँ, पर वो तो बेसिक है, मैं एडवांस बोल रहा हूँ, मतलब जैसे बहुत बहुत चीज नहीं आता है आप लोगों को, अभी वो सब हमने आपको जानना है। अभी हमने एक वो बनाया प्रोजेक्ट, सौरभ ने, मैंने और एक दोस्त ने मिलके। क्या बनाया प्रोजेक्ट में? मतलब हमने EC2 पे आरडीएस लॉन्च, मतलब आरडीएस यूज करा माई, उसमें हम्म, कहते हैं, मतलब उसको प्राइवेट सेपरेट में रखा, सिक्योर सिक्योर करने के लिए। उसमें ESG लोड बैलेंसर और लैम्डा यूज हम्म, किया, और क्लाउड वॉच का डैशबोर्ड। और बस? बस इतना। अच्छा, आपको मैं प्रोजेक्ट देता हूँ, अगर वो कर दिया तो ठीक है। दो आपको बताओ। क्या करना है? ये प्रोजेक्ट देकर रुको। बताओ, मेरे को स्क्रीन में दिख रही है। कहाँ पे गया प्रिंट? सौरभ स्क्रीन में मुझे दिख नहीं रही है। देखो, ये आपका हुआ एक बीपीसी, ठीक है। अब मैं नोट कर लूंगा, सर्विसेज के नाम ले लो। हाँ क्या? मेरे को स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं सर्विसेज के नाम नोट कर लूंगा, आप नाम ले हाँ हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, लो। पर शायद आपके वहाँ एंड से कुछ इशू होगा, क्योंकि यहाँ पे तो शायद सौरभ को हो रहा है स्क्रीन से। पता नहीं हम्म, क्या। ठीक है, देखो वो तो मैं दबा रहा हूँ क्या काट के? बता रहा हूँ रुको। ये आ गया, बीपीसी है ये आपका है मुंबई में, ठीक है। ये है आपका आयरलैंड में, दोनों अलग अलग रीजन में बीपीसी है, ठीक है।
अभी है आपके पास एक आपका लैपटॉप, ठीक है। अभी मैंने जो क्लास में कराया था मैं आपको वो बोल रहा हूँ। मैंने क्या किया था, रुको, ये हो गया आपका पब्लिक सबनेट, ये हो गया प्राइवेट सबनेट, यहाँ पर भी सेम, ओके। और यहाँ पे आईपीज मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आपका ये हो गया आपका 172.198.1.0/24। आपको पता है ना कैसे आईपी सब कुछ करते हैं, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं लास्ट में जो 24 है। हाँ, मतलब इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, ये 24 जो लास्ट में लिखा हूँ मैंने। अरे यार इसको कैसे को पता है क्या बोलते हैं, को ऊपर कर, इसको बोलते हैं सब मास्क, थोड़ा सा सब मार्क्स, ठीक है। सब मार्क्स डिपेंड करता है एक फॉर्मूला के ऊपर, वो फॉर्मूला पता है आपको, वो फॉर्मूला है आपका 2 to the n to the power 2 - 1, ये होता है आपका सब मार्क्स। सब मार्क्स मीन्स आपका 5, आपको पता है कि 5 आपका आईपीज जो है प्राइवेट आईपीज, वो रिजर्व रहता है नेटवर्किंग ये सब के लिए, वो रिजर्व रहता है, तो वो आईपीज छोड़ के आपको यूज करना पड़ता है, वो आपको नहीं पता होता है, ठीक है, कोई भी नहीं। तो स्लाइडर जो होता है साइडर, ठीक है, वो छोड़ दीजिए आप। मतलब तो इसका ये होता ऐसा, है ना, /28 तक रहता है, बाकी के 5 वो होते हैं 16 से /28 तक AWS में। हाँ, ये जितना स्लाइडर, ये सब ना सब मार्क्स जितना बढ़ता है, आप हम्म उतना कम आईपीज यूज कर सकते हो, और सब रेंज मार्क्स इसका जितना होता है। घटता है उतना ज्यादा आप आईपीज यूज कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग हम्म, आपका आपको यूज करना है, ठीक है। ठीक। और ठीक है, आप समझ लो ये है, ठीक है, इसको प्राइवेट आईपी, ये पब्लिक आईपी, मैं उतना लिख नहीं रहा हूँ, मेरा यहाँ पे पेन में संभाल नहीं, मेरा यहाँ पे पेन चलता नहीं है अच्छे से, ये पेन वाला, इसलिए ठीक। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो सोच लो कि ये आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप से आपको, ठीक है, ये आपका पब्लिक, ठीक है, पब्लिक में गए, एंड थ्रू पब्लिक मैं बना देता हूँ, ये है पब्लिक, ये है प्राइवेट, ये है, यहाँ पे पब्लिक की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, अब जो भी बता रहा हूँ। तो आपको कनेक्ट करना है डेटाबेस से। कैसे कनेक्ट करोगे आप, पहले लैपटॉप आप कनेक्ट करोगे पब्लिक आईपी में डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप से डायरेक्ट प्राइवेट में कनेक्ट करोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। हम्म। तो इससे इसके पहले आपको आपको पता है बेस्टन सर्वर क्या होता है, कौन सा सर्वर? बेस्टन सर्वर। बेस्ट एंड तो नहीं पता, बट ये डायग्राम का थोड़ा बहुत हमने बनाया है प्रोजेक्ट, मतलब हाँ, रिमोट एक्सेस तो लेते हैं प्राइवेट इसी टूल हाँ, का। तो इसको बोलते हैं बेस्टन सर्वर। जो आप यहाँ से यहाँ पे जंप करा रहे हो ना, इसको जंप सर्वर या फिर बेस्टन सर्वर बोलते हैं इसको। हाँ, जम तो सर, मैंने जम पहले कर। लैपटॉप, हाँ, तो लैपटॉप से पहले आप पब्लिक आईपी में जंप किए, उसके बाद पब्लिक आईपी से आप प्राइवेट आईपी में जंप किए, यहाँ तक मैंने करा दिया है आपके, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, तो मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने उसका रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके ग्रुप में दिया था, क्योंकि मैं उस दिन क्लास में नहीं आ पाया था, तो मैंने रिकॉर्ड करके वो ग्रुप में दिया था। ये हो गया आपका बेस्ट, यहाँ तक मैंने कराया है। अभी आपको क्या करना है, जो और एक बीपीएससी क्रिएट करना है दूसरे रीजन में, ठीक है, रीजन अलग अलग है इसमें। ठीक। रीजन में क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करना है। अभी अभी आप ये सोचो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कोई भी पब्लिक पब्लिक में जंप नहीं करना है, पब्लिक नहीं है इसका, डायरेक्ट आपको प्राइवेट में ही जाना है, पर आपको कैसे जाना है वो आप देख लो, आप अच्छा, अपना मतलब चैट जीपीटी लगा लो। हाँ ठीक है, मतलब जैसे कि ये जो मुंबई वाला है ये पब्लिक है, और जो IRL वाला है वो प्राइवेट सबनेट है। नहीं, इसमें भी पब्लिक है, पर आप पब्लिक में जंप नहीं कर सकते, अगर मैं पब्लिक में जंप कर सकते हो तो मैं डायरेक्ट अपने लैपटॉप से डायरेक्ट यहाँ से करूंगा ना, मैं इतना घूम के क्यों हाँ, जाऊंगा। तो ये दोनों और जो VPC है ये डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट है, डिफरेंट रीजन में है, एक रीजन में नहीं है। ओके ओके। आप अभी इसके डीबी सर्वर में हो, इसके डेटाबेस सर्वर में हो, मुंबई के डेटाबेस सर्वर में हो। अभी आपको मुंबई के डेटाबेस सर्वर से सीधा जंप करना है आयरलैंड के डेटाबेस सर्वर में। वो आप कैसे करोगे, आपको बस मुझे बताना है करके।
ठीक है, ये ठीक आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है। आईएनएल के डेटाबेस के सर्वर में मैं जाना आपको प्राइवेट वाले। हाँ हाँ बस ये और जो आपको मुंबई का करना। डेटाबेस होगा वो पब्लिक में होगा या प्राइवेट में होगा? डेटाबेस तो ऑलवेज प्राइवेट में ही होता है, चाहे किसी का भी हो। मैंने ये जो पब्लिक सबनेट भेजा है ये सब जैसे VPC में जो दोनों सर्वर होता है ना, हाँ आप ऐड करने के लिए। पर यहाँ पे आप समझ लो, आप यहाँ पर भी होता है ऐसे रियल टाइम में, यहाँ पर भी पब्लिक सबनेट होता है, पर मैं एक एज ए प्रोजेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको पब्लिक में कनेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट डेटाबेस में कनेक्ट करना है, इसीलिए। हाँ पर हाँ हम लोगों को पब्लिक में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? आप आपको ऐसे करते हो जैसे आप EC2 इंस्टॉल करते हो ना, सॉरी, वहां पे आपको क्या करना है, आपको जब लॉन्च करोगे EC2 इंस्टेंस, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप पब्लिक वाला ऑफ करोगे। यहाँ पे एडिट में जाके, रुको लैपटॉप हैंग हो रहा है थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पे जैसे ऑटो अनेबल होता है ना, ऑटो अनेबल पब्लिक आईपी, जब आप डेटाबेस सर्वर क्रिएट करोगे तो आपको वो डिसेबल करना है। ठीक है, जब डेटाबेस सर्वर आयरलैंड के लिए भी, और जैसे आयरलैंड के लिए भी करना है और आपको इसमें भी करना है VPC में, जब आप VPC क्रिएट करोगे वहां पर भी आपको डेटाबेस में ऑलवेज इसको डिसेबल ही करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आयरलैंड के लिए आपका जो VPC क्रिएट करोगे तब आपको क्या करना है, और आपको वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, वो मिल ही जाएगा, इजी है। तो वो दिमाग लगा के आप वो करो ये प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट कर लिया तो आपको VPC आता है, मतलब अच्छे ठीक है, तरह से आता है। ठीक है, ठीक। तो आप ये कर लो। और हर एक चीज प्रोडक्शन लेवल पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे सबनेट मार्क्स कितना भी ले रहे हो, सबनेट आपका मिस यूज नहीं होना चाहिए। मतलब IP एड्रेस जो आप क्रिएट कर रहे हो वो उतना ही होना चाहिए जितना भी, ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे सबनेट मार्क्स 10 लेके बैठे हो, मतलब कितना IPs आप क्रिएट कर सकते हो, एकदम प्रोफेशनली होना चाहिए प्रोजेक्ट। वेस्ट नहीं जैसे करना। अगर वेस्ट नहीं करना है IPs वेस्ट नहीं करना है बस। ठीक है। ठीक है, आप करो वो, बाकी देखते हैं कल फिर। ओके सर, नो ठीक है, इशू। कल मैं क्लास के बाद ही आपको वो देखूंगा जो प्रोजेक्ट आपने किया है जो भी है। ठीक ओके, है, ओके, ओके। ठीक ठीक। थैंक यू, बाय। बाय।